फाइनली फिर से आ गए एक थर्ड वीडियो लेके। मेरे चैनल की तीसरी वीडियो है, जो कि मैंने कहा था कि एक स्टोरी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैंने फिर से चेंज कर लिया। मैं एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसने बहुत से लोगों के मॉनिटर तोड़े हैं, माउस तोड़े हैं, कीबोर्ड तोड़े हैं। अब मैंने भी ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं मुझसे क्या होता है, मुझसे कहाँ तक खेला जाता है। फाइनली खेलते हैं, पहले एक बार सेटिंग चेक कर लें। रेवोल्यूशन है 69 और वही है। इतना तो है कि मैंने मॉनिटर कर रहा है। इतना सपोर्ट ही नहीं करेगी जहाँ तक मुझे लगता है, इतना सपोर्ट नहीं करेगी। ग्रेट स्ट्रीम स्ट्रीम कर देते हैं, ग्रेट स्ट्रीम ठीक है। फुल स्क्रीन हाउस सेंसिटिविटी थोड़ी कम स्टार्ट। ये निकला लोडियो बाहर। ये क्या कीबोर्ड साइड कर दो थोड़ा सा। हाँ आप खेलते हैं। एक्चुअली मेरा माउस पैड काफ़ी छोटा है, तो मुझे नहीं लगता मुझसे खेला जाएगा ये, लेकिन ट्राई करने में क्या यार। चल ओ भाई, ओ भाई, चल ओ क्या लंबा यार, चलना यार, चल चल। आई थिंक आराम आराम से खेलना पड़ेगा यार, इतना ही नहीं हो रहा मुझसे बात। तो ओ ओ चल चल चल। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Slow. Mati tu. Tiga. Nah, एक मिनट आप पीछे थोड़ा सा थोड़ा ही नहीं लगवाने आपको यार। ओ एंचर क्या हो रहा है यार, स्टार्टिंग में फट रही है ये तो। क्या हो रहा है ये, आजा। आगे चला, आगे नहीं जा रहा ये तो। आगे क्यों नहीं जा रहा भाई तू, ऐसा लग रहा है मैं नीचे गिरूंगा, अब पक्का नीचे गिरूंगा। इरिटेटिंग गेम है यार ये, तो गिवन डाउन इसे यार
लांग ही देना पड़ेगा। आ गया वो हो गया। ओ ओके ठीक है। Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. जा लोडू। This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazor, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. कीबोर्ड मॉनिटर सब तोड़वाता है। कहाँ से फ्रेंडली यार अरे नहीं हुआ। Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. डंडे गेम बनाओगे तो जाहिर सी बात है। मुझसे नहीं होगी यार ये। अरे कुछ तो जा भाई, वीडियो में कुछ तो दिखाना है। क्या दिखाओ? ये दिखाओ, ये लंड बेंच। यार यही फंसा रह जाऊंगा। Yes. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. मेरे में इतनी पेशेंस नहीं है यार, क्योंकि मैं इस गेम को खेलूंगा। मुझे नहीं लगता है शायद ये एपिसोड ये एक ही में रह जाएगा। मेरे में इतनी पेशेंस आई नहीं भाई साहब। इतनी पेशेंस कहाँ है?
कह रही है 2 साल ढूंढने लगा सकता हूँ मैं। वो तो फटाफट चाहिए यार। हाँ ऐसे 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 तो चाहिए यार। The obstacles in sexy hiking are unyielding, क्या and that makes the लंड game बैग पे uniquely बार बार frustrating. आगे छूट गया। But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary ओह mountains build समझ गया। themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. तो मुश्किल है यार, यहाँ से पार होते ही नीचे। ओ ओ ओ ओ ओ। कहाँ चला गया? अगर सच में मुझे यहाँ जाना हो तो ये कभी नहीं जाएगा। गारंटी हो गया। अगर मुझे सच में वहाँ जाना हो तो कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with, and in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. हाँ ओके ओके। अरे हाँ ओके। ठीक है ठीक है, एकदम ओके। एक नंबर एक नंबर। हाँ थोड़ा सा और है। एक नंबर एक नंबर। हाँ हमारे गलत। ओके। तो धक्का देता हूँ ना मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो मैकेनिक्स You've ऐसे done हैं this part उनमें before. You know it's मार छोड़ possible. दे। Just do what you did the first time. वहाँ से लाइन से आ गया लेकिन यहाँ से जा नहीं रहा। ओह दैट इज ग्रेट ग्रेट। क्या क्या मतलब अगर ये पूछ रहा होगा यार। एक्शन दिखाना पड़ेगा लगता है। एक्शन इक्वल टू एक्शन। यार अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा हूँ। वो Oof, sorry about that. बस 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 हो गया हो गया हो गया मेरा हो गया। इससे ज़्यादा नहीं, ये हो गया। मैं नहीं करूँगा,
इस वीडियो को लाइक मारो ना मारो, कुछ भी कर लेना, ठीक है। मारे ना मारे, और न्यू वीडियो आती रहेगी, ठीक है, टेंशन मत लो। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस। मुझसे नहीं होगा, इससे ज़्यादा पेशेंट मेरे में है ही नहीं, है ही नहीं। इतने पे ही मैं पागल हो गया। आगे जाके तो भैया मुझसे नहीं होगा। मेहनत करके आगे तो मेरे से नहीं होगा। माफ़ी दे दो हमें, माफ़ी। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू। हमसे ना होगा। ये गेम हटाओ, बहन चूतिया गेम है ये। मेरे को नहीं खेलना, तू जा, तू जा।